हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के मिड टर्म पेपर्स जो कि अप्रैल 2023 के लेटेस्ट है। बहुत डिपार्टमेंट ऑफ यूजीएस और जीएस के स्टूडेंट देख सकते हैं बिकॉज पेपर सेम बना था। मॉर्निंग आफ्टरनून दोनों डिस्कस करेंगे। बिगिन विद आफ्टरनून के जो पहला पेपर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ट्रेजेडी, व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स and how it is superior to epic poetry, discussed with reference to Aristotle Poetics. और क्वेश्चन नंबर 2 है Philip Sidney terms poetry as imaginative imitation, whose purpose is teach and delight. In the light of his essay, The Defense of Poesy, explain what he actually means by this comment. अगला पेपर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस IR का। क्वेश्चन नंबर 1 है mention the state actors in international relations and explain how they can play their role in improving bilateral relations of a country. और क्वेश्चन नंबर 2 है define international relations and discuss socio-economic and religio-politic conditions which led to emergence in 1648. अगला पेपर है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए राइट अ डिटेल नोट ऑन एटमॉस्फेयर, इट्स लेयर्स, केमिकल कंपोजिशन। और पार्ट बी है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए व्हाट इज मेंट बाय इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, सपोर्ट योर आंसर विद स्टेबल एग्जांपल्स। पार्ट बी है इसका डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट बायोम, राइट सम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टंड्रा एंड डेजर्ट बायोम। अगला पेपर इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट डज फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ आइस कैंडी मैन स्टैंड अबाउट एंड फाइट अगेंस्ट देयर फेट्स एंड डिनाई others authority, discuss with relevant examples। और दूसरा है जी द जू बाय तारिक रहमान is the reflection of our society where needy people are becoming needier and rich are spending more money in superficial things substantiate। अगला पेपर सोशल लिंग्विस्टिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 while studying dialects in a particular community, how might social factors such as age, gender, education, socioeconomic status influence the way people use language, and what implications might this have for language attitudes and language change या language shift भी आप कह सकते हैं। So write a precise analysis after careful consideration in the light of socio linguistic principles। Question number 2 है what is bilingualism and how does it differs from multilingualism, discuss different types of bilingualism and multilingualism and their implications for language use, what are the challenges faced by bilingual and multilingual individuals in education, employment and social integration। अभी मॉर्निंग के पेपर्स देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए राइट अ comprehensive note on ecosystem productivity and energy flow in an ecosystem, or differentiate between food chain and food web। Question number 2 part A write a note on soil, its benefit and lithosphere। Part B what do you know about silent spring and term sustainable development। IR का है। Question number 1 define theory of power in IR, explain how states behave to balance power, elaborate with examples। Question number 2 what is the modern concept of international security, explain with model the 6th level of security factors। Pakistani literature। Question number 1 discuss the binary opposition related to privileged foreign imported animals and marginalized indigenous zoo workers in the story The Zoo। और क्वेश्चन नंबर 2 है how did Parsi community construct its identity according to majority and ruling class during partition, discuss with reference to ice candy men। Literary criticism and theory। Question number 1 what are the key differences between Aristotle's and Plato's view on poetry and its role in society? Question number 2 what are the main objections brought against poetry by enemies? How does Philip Sidney answer them in his essay An Apology for Poetry? Social linguistics। Question number 1
How would you explain regional and social dialects with reference to language change? Further, how does a specific variety gradually rise to become a standard? Question number 2. How would you define a Pidgin and Creole? Discuss the features whereby the two can be differentiated. So this is all. Thank you for watching this video.